Hello, my beautiful people. I am Mansi, your manifestation coach, and let's learn how to manifest your life partner easily and effortlessly. सो लाइफ पार्टनर चूज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन है तुम्हारे लाइफ का, क्योंकि तुम एक इंसान के साथ पूरी लाइफ गुजारने वाले हो. तो आई वुड से इंस्टेड ऑफ गुजारना, हम जिए उसके साथ. सो आई हैव क्रिएटेड अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हाउ यू विल मैनिफेस्ट योर लाइफ पार्टनर, एंड द लास्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. ओके, स्टेप नंबर 1, मेक द स्पेस. what does this mean? You want to manifest your life partner, but तुम अभी भी अपने ex से बात करते हो. You want to manifest a life partner, but you are in a situationship. You want to manifest a life partner, but you are still, fooling around. आप स्पेस ही क्रिएट नहीं कर रहे हो आपके लाइफ में. आपको भरोसा ही नहीं है कि कोई आने वाला है, क्योंकि अगर आपको भरोसा होता, यू वुड हैव वेटेड फॉर योर लाइफ पार्टनर टू कम. सो आई हैव सीन मेनी केसेस इन माई लाइफ. इफ यू आर गिविंग योर लव, योर अफेक्शन, योर केयर, योर थिंकिंग टू समवन who is not going to be your life partner, you are not making the space for the person, for your life partner to come. If even if you are manifesting, आप manifestation technique कर रहे हो आपके life partner आने के लिए, but still you're fooling around, you're giving all the love to someone who is not going to be your life partner, you are not going to manifest. So create the space in your life and wait for the right person to come in your life. स्टेप नंबर 2, ओवरकम योर लिमिटिंग बिलीफ. सो आपके लाइफ में जितने भी आपके रिलेशनशिप रहे, या आपने किसी के रिलेशनशिप को बहुत क्लोजली एक्सपीरियंस किया है, तो उनकी नेगेटिव चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है कि शायद ये बंदा ऐसा हो, शायद मुझे ऐसा बंदा मिल जाए, वॉट एवर इट इज. अगर आपको चीटर मिले है तो आपको हमेशा एक डर बना रहता है कि मुझे चीटिंग वाला पार्टनर ना मिले. अगर कोई इमोशनली अवेलेबल नहीं था आपके रिलेशनशिप में, तो आपका वो लिमिटिंग बिलीफ बन जाता है कि इमोशनली मेच्योर लड़के नहीं होता है. अगर आपके लाइफ में ऐसा रहा है कि कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा था, एंड ये सब आपके एक एक लिमिटिंग बिलीफ बन जाते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल दिस. तो आपको क्या करना है, आपको हर एक लिमिटिंग बिलीफ को एम्पावरिंग बिलीफ से शिफ्ट करना है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ यू थिंक लव हैज टू बी अर्न, you have to write, love flows to me naturally, I don't have to earn it. I am not enough, I am already enough, exactly as I am. People always leave. The right people stay and choose me consistently. I have to overgive. I am valued for who I am, not for how much I give. Because this limiting belief blocks your life partner to come into your life, or you will attract the same kind of partner again and again अगर आपने ये limiting belief change नहीं किए तो. Because your identity is based on your belief, your thought and your action, which actually creates your reality. So if you change your belief about your life partner, you can change your reality too. Step number 3, and the most important one, be very, 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 very clear how you want your life partner to be. Make a whole list, उसके features, उसके characteristic, उसका behaving, उसका तुमको treat करने का gesture, अगर तुम sad हो, अगर तुम happy हो, अगर तुम anxious हो, तुम anxiety से जा रही हो, your partner should know everything about you. वो emotionally mature चाहिए, confident चाहिए, पैसे में कैसा चाहिए, उसके पास कार चाहिए. Be as delusional as you can. Trust me on it. और ऐसा नहीं है कि you are asking too much or is it too good to be true. ऐसा कुछ भी नहीं है. Trust me. Be delusional like anything. Trust me. Because the universe only deliver what you believe. Okay? तो अगर आप ये सब लिस्ट बना रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये होगा या नहीं होगा, ऐसे मत सोचो. ऐसे सोचो, मैंने लिखा है, होगा ही होगा, बिकॉज आई बिलीव इन इट. इफ आई एम अ पर्सन हु इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर पीपल, हु इज केयरिंग, हु इज लविंग, who is giving, who love to show a gift on that loved one, who love to surprise them, why can't you have that kind of partner? तो आप एक लिस्ट बनाएंगे जिधर आपके पार्टनर के क्वालिटीज होंगे, और आप और एक लिस्ट बनाएंगे जहां आप मेंशन करेंगे
कि आप आपके पार्टनर को कैसा ट्रीट करने वाले हो। जब वो जेस्चर कर रहे हैं तो आप कितने ग्रेटफुल रहोगे, आप उनको थैंक्स बोलोगे, आप अगर उन्होंने आपको कोई गिफ्ट दिया तो आप भी उनको गिफ्ट दोगे, वॉट एवर इट, हाउ यू विल एक्सप्रेस योर लव टू योर पार्टनर, यू गोना राइट ईच एंड एवरीथिंग, you will do prank on him, whatever you like, whatever is your love language, write everything that in detail. So आप एक लिस्ट बनाएंगे जहां आपके पार्टनर के क्वालिटीज होंगे, और सेकेंड आप लिस्ट बनाएंगे जहां आपके क्वालिटीज होंगे. So why you will make this list? Because you should know, are you the version of yourself who is willing to hold that kind of love? Do you have the capacity to accept that kind of love? Do you trust yourself with that much of love? Be very raw with yourself, accept your limiting belief, and upgrade yourself. I told you step number 4 is the most important part here, is becoming her. Whatever you wrote in that list, how you're gonna shower your love on your loved one, are you the person? Do you have the capacity of doing all that right now? Do you have the space? If not, work on yourself. If you have written, I have a very loyal partner, I am very secure with him, are you secure right now? अगर आपका लाइफ पार्टनर आ गया तो क्या आप उस पर डाउट नहीं करोगे? बिकॉज ऑफ योर पास्ट रिलेशनशिप, वट एवर ट्रामा यू हैड, यू हैव टू ओवरकम दैट, यू हैव टू वर्क ऑन दैट. If you want to manifest your life partner, you have to become that person yourself first. If you want healthy relationship, are you a healthy person to be with? If you want a responsible person, are you responsible enough to take responsibility of your own? If you want a caring partner, do you take care of yourself? If you embody her, the future version of yourself, you will automatically attract your life partner. When I wanted to attract my life partner, I created the space. I started going to gym. I started losing weight because I wanted someone who is fit, who focus on their fitness. I wanted someone who want to grow in their life. I wanted someone who is emotionally mature, who knows that I am a very soft-hearted person, who will take care of me. So I started taking care of my body, my health, my hair, my mind, my personal space. I started going to gym. I started so many things. I was totally focused on myself, and out of nowhere, my life partner showed up. To work on the list you have made of your future self with your partner, embody her and trust me on it. You will see your life changing. You will see how effortlessly you have manifested your life partner. While becoming your best version, you also have to take step. You can go on dates, you can see people, you can talk to them, because action is also necessary. But something is not resonating with you, if someone is not resonating with your list, don't move forward. Thank you for watching the whole video. If you have any query, do comment and I'm happy to answer you.